was the problem. Okay, ji. Moving towards the topic. Bismillah Rahman Rahim. Okay, what we are going to discuss today, that is current and electricity. Actually, this is a huge topic, and there are so many questions coming from this topic. So I believe that you people would take special care of this topic, and especially this is the topic of IGCSE, which consists of lot of calculations, Electromagnetism does not have calculations. Nuclear has a little bit calculations and theory, but current electricity has a lot of calculations. Especially you have a variety of equations here, so be careful when I will uh, tell you that this equation is important and this is used in this way and this way. You have to take care of it. Okay, so first of all, this topic is divided into three parts, and this first one is basically the electrical quantities. So in electrical quantities, first one is your charge, but I have discussed in detail about the charge, so I will start from the current. So current is actually the rate of flow of charge. So when you define it, it is simply I is equals to q by t. So its formula is very simple to now. I is equals to q by t. Here is its formula, and its unit is ampere, and ampere is equals to coulomb per second. I believe that it would be quite clear to you. This is formula to calculate the current, and definition is the rate of flow of charge, or the amount of charge passing through a unit, passing through a point per unit time. Not right, don't write 1 second. So here in this diagram, actually I have shown that the current is flowing in the wire due to electrons. So electrons are flowing in this wire, so they are moving towards negative terminal, towards positive terminal. And there is another current which is called conventional current, and conventional current is basically the resultant of electron, yani result of electrons flow. That's why it flows from negative terminal, positive terminal to the negative terminal. That's why, do you see, this is your conventional current. This is the direction of your conventional current. So when we talk about conventional current and electronic current, both are opposite to each other. So you have to take care of this. Electrons ka jo flow hai, that is opposite to the positive charges, not proton. Remember this thing. So here is the conventional current and electronic current in front of you. ठीक है? ठीक है सर. Then we have to talk about, then we have to talk about the, yeah, this is the problem solving. In that problem solving, the only game is you have to know about how much charge and how much time is there, and in that much time how much current can be produced. So these four questions are the practice of I is equals to q by t, q is equals to it, t is equals to q by I, etc, etc, etc. I believe that it is not a big deal. Okay? The important thing, you have to convert the time into seconds, and your answer is there. Okay, then we will talk about the measuring of the current. So measurement of the current is with the help of ammeter is always placed in series with your circuit, in series of battery, and the resistor are the component which is in the circuit. So ammeter is placed right in right polarity. How? The positive terminal of the ammeter is connected in ammeter. I will show you the diagram. Actually, this is an ammeter. So in ammeter, there are two terminals. One is red, one is black. The red terminal is considered to be the positive, and black is considered to be the negative. So we connect the black terminal to the battery directly, or uh, indirectly. It does not matter, because it is connected to that side of the battery. For example, there is a resistor. Let's say here is a resistor, but this side of the ammeter is coming, this side of the wire is coming from negative terminal of the battery, na? So that is why it would be negative, and the other side would be connected to the positive terminal of the battery directly or indirectly. That will give you the amount of current. So you have to remember one thing from this slide, that emitter is always connected in series with battery and the appliance, right? Then this is the small emitter. In that one we can measure very small amount of current. It is DC, yani it measures the direct current, and it is measuring milliamperes, small current. It is sensitive. अब आप देखो, if I have all the emitters in series, so all of the emitters will read the same current. This is the beauty of an emitter. It reads all the current in the same. Yani
all emitters A1, A2, A3, A4, I5, A6, all currents would be same in series. So in series current remains same. Okay? Okay, are you people getting it? जी सर. Okay, Yes then we sir. have the second physical quantity, EMF or electromotive force. Electromotive force is defined as, you have to define at the work done per unit charge. This is its definition, exam definition for 1 mark, work done per unit charge. So by that reference, I can simply say that electromotive force is that force in which we can say, yeah, it is not force, sorry, it is not force, it is actually energy. Remember one thing, and it is energy delivered by a cell or a battery to make the charges to flow in the circuit. So the electromotive force in the electrical source is work done by the source driving a unit charge around the complete circuit. So battery makes this possible. So battery is the source of EMF. So I believe that it would be very clear to you. So by definition, it is work done per unit charge. So its unit will be joule per coulomb. So it is basically equal to volt. So SI unit of the EMF is volt. Its formula is W divided by Q. I think we had missed one slide of its formula. That electromotive force formula is, it should be written here. That is W divided by Q. Okay? So Formula it आप लिख is, लेते हैं. It is written. yeah, I think up or something. Down. Yeah. Up. कहीं पे है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा basically. No, Okay, because I just saw it. But okay, wait, just यहाँ sir, लिख दें. the voltage and actual are same. हाँ, तो let's Because say I have, EMF is, हाँ हाँ बोलो. is it is there a difference between voltage or dipole difference and EMF? मैं बताता हूँ. Just after two more slides, you would be able to handle that. Just मुझे थोड़ा सा EMF को clear करके आगे चलने देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं. Actually, electromotive force of the battery is the energy delivered by the battery or energy provided by the battery to push a unit positive charge or drive a unit positive charge into the entire circuit. The problem in the EMF or problem with the EMF is it is not a force. So when I'm going to write the formula, I can simply write some other points. It is not force. Remember one thing, it is energy. Okay, there is an MCQ which is asked to you. It is energy. So that energy is energy which is non-electrical energy. Okay, it is non-electric energy, and that is converted to electrical energy of the charge. It is non-electric energy of what? A voltage source or battery, isn't it? It is non-electric energy of battery or source, and that is converted to electrical energy of charge. It is converted to electric energy of charge. So that is, okay, battery consumes its non-electrical energy, mean chemical energy, and it feeds the charge. That's why the charge is basically getting electrical energy, and that is why we say that it is work done by the battery. Work done by the battery. Mariam, usually we call that it is the voltage of the battery, right? That is why batteries are called voltage source, simply. So it is technically voltage. Okay, technically it is what? It is Yes. voltage. But there is a difference of energy in voltages of, potential difference and voltages in case of EMF. So I will make it clear. Just before that, let's talk about the combination of EMFs. EMF sources can be combined together. For example, in your remote, you use different cells in series. So when you add the cells in series, the EMF would be increased, right? For example, 1.5, 1.5, 1.5 all together, they will give you 4.5 volt. But if one of the cell is reversed, right? For example, if I say that this is 1.5, okay, and this is 1.5,
This is 1.5. So what would be the total EMF across these cells, across here, across point X and across point X and Y? So it would be 1.5. It is positive. It is reverse, so it is negative. So it would be taken as positive. So 1.5 minus 1.5 plus 1.5. So they would be gone. So these three batteries combinedly, they are giving you 1.5 volt. Got it? So that is why when you place one cell inverted, it does not work in the remote. ठीक है, तो और भी आपने याद रखना है कि EMF is increased. Actually, if you add the cells with right polarity, the EMF is increased. So when EMF is increased, the current, yani current, more charges are driven in the circuit by combinedly by all the batteries. That is why charge increases and current increases in the cell. तो अगर आप लोग 3 बैटरीज लगाओगे कहीं पे किसी लैंप के साथ, तो लैंप वुड बी मोर ब्राइटर. Got it? Instead of one battery. It means that 3 batteries are delivering more current to the lamp. They are delivering more energy. But when you are going to connect the cells in parallel, the cells will, yani same charge will flow throughout the circuit, but charges, yani these batteries would have less work to do. For example, if there is a current flowing through this circuit, yani flowing through this lamp, let's say I am going to connect a lamp here. Okay, this is a lamp and there is 6 ampere current flowing through this lamp. So all these batteries are providing 2 ampere each. How much? 2 ampere each. That is why if the same batteries are connected in series, then what would happen? Every battery has to deliver 6 ampere current. So that is why they would more deliver more current and batteries would drain more quickly in series. But in parallel, the batteries are drained less quickly because the batteries take rest. Every battery is not going to perform 6 ampere, yani it is not delivering 6 ampere current. So they divide the current amongst them, and that is why it take more time for the batteries. So that is why I have written one point, that the cells will last longer before going flat or before dying. The cells are able to supply the higher current for a long time. Okay, is it clear? सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको, yeah, this is lamp. So in that lamp, 6 ampere current is required. And if there would be one battery, let's say one battery, one battery will provide 6 ampere. So it would be drained more quickly. Then you connected 2 batteries, but now the current in the lamp would not be 6 ampere. That would be 6 by this, 6 by this. तो टोटल लैंप आपके करंट में लैंप कितना हो जाएगा, सॉरी, लैंप में करंट कितना हो जाएगा, 12 एम्पेयर. Then you have connected third battery in series. So third battery in series will provide again 6 ampere. अब आपके लैंप में जो करंट हो जाएगा, it would be 18 ampere. So lamp would go, यानी लैंप will blow. ज्यादा करंट जब आप लोग पास कराओगे तो it would be melt by heating, क्योंकि करंट हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है ना. तो इसलिए जब आप ज्यादा बड़ी बैटरीज लगा देते हो या बैटरीज कनेक्ट करते हो सीरीज में, तो मोस्टली आपके अप्लायंस उड़ जाते हैं. ठीक है, हम्म. ये सीरीज में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन द इंक्रीजेस द ईएमएफ बिकॉज चार्ज गेन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 3 cells and when they pass through that, so combined EMF is calculated by adding the individual EMFs. ये मैंने ऊपर समझा दिया. लेकिन पैरेलल में आपके पास क्या होता है, आपके पास हर बैटरी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली बैटरी 2 एम्पेयर का करंट दे रही है, ये वाली बैटरी भी 2 एम्पेयर का करंट दे रही है, ये वाली बैटरी भी 2 एम्पेयर का करंट दे रही है. ओवरऑल करंट इन द सर्किट वुड बी 2 + 2 + 2 6 एम्पेयर हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बैटरी के ऊपर लोड कम आ रहा है. तो पैरेलल में जब भी हम बैटरीज लगाते हैं तो वी डिवाइड द लोड. ठीक है ना, तो लोड डिवाइड करने से पता क्या होता है, बैटरीज का लाइफ टाइम बढ़ जाता है. इसलिए आप लोग सोलर में एक बैटरी नहीं लगाते हो, 2-3 बैटरीज लगाते हो पैरेलल में. आप यूपीएस में 1-2 बैटरीज लगाते हो पैरेलल में,
ताकि आप लोगों के पास बैटरीज के ऊपर लोड कम हो और आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाए। ठीक है सर। ये बात समझ आ रही है? जी जी। ओके। देन पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन अगेन इट इज समथिंग डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली, मैं अभी एक क्लास पढ़ा रहा था आप लोगों से पहले, एंड आई जस्ट gave them a mean perfect example of potential difference and EMF, और आई होप सो कि मैं अगर आपके साथ वही स्लाइड शेयर करूं पहले, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वाइट इजीली। जस्ट मैं इस स्लाइड पे आता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, और आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज द बैटरी, ठीक है। और बैटरी का काम क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ब्लू, ब्लू इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शो किया हुआ है। दे हैव बीन ड्रेन्ड बाय द लैम्प, they are energyless electron, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, they are the energyless electrons, and when those energyless electrons reach to the battery, battery uses its chemical energy, ये देखो, battery uses its chemical energy, and those charges are uh, shifted from lower potential to the higher potential. Now their color is changed, मैंने कलर स्कीम से समझाया। बेसिकली कलर चेंज होने का मतलब, रेड को हम लोग क्या कहते हैं? हाई एनर्जेटिक है। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? दे आर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दे विल नीड अ पाथ। ये देखो, पहले मैंने करंट, ये सर्किट बाद में लगाया था। नाउ दिस इज द बैटरी, दिस इज अ फुली चार्ज बैटरी। चार्ज बैटरी का मतलब ये है कि दैट बैटरी हैज यूज्ड इट्स केमिकल एनर्जी टू चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, इनको शिफ्ट किया। नाउ व्हेन वी विल कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स वापस बैटरी में डाउनवर्ड नहीं आ सकते, लोअर टर्मिनल पे नहीं आ सकते। दे विल नीड अ पाथ टू डिस्चार्ज देयर एनर्जी। तो इस एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए वो क्या करेंगे? इफ आई कनेक्ट अ लैम्प टू देम, सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड रश टुवर्ड्स द लैम्प। ये देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रश कर रहे हैं। सो व्हेन दे आर रशिंग टुवर्ड्स द लैम्प, lamp is the consumer, so lamp will convert their electrical energy into light energy, yani light is non electrical energy. So this all is done due to difference of potential. देखो, difference of potential का बहुत easy मतलब ये है कि if the lamp is not having high voltages here and low voltages here, electrons will never flow through this, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस, जैसे आप ये पढ़ते हो ना कि द वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, इन द सेम वे चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। सो द नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे ये ब्लू चार्जेस मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, दिस इज योर लो एनर्जी लेवल। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन वुड पास थ्रू द लैम्प, ये देखो, लैम्प विल कन्वर्ट देयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, एंड नाउ those all electrons are basically energy free, energy less, थके आ रहे, ड्रेन हुए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड अगेन दे विल गो टू द बैटरी। बैटरी इनको फिर चार्ज करेगी, अपना पोटेंशियल यानी अपनी ईएमएफ यूटिलाइज करेगी, केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करेगी, एंड यूटिलाइज करके इनको चार्ज करेगी। ये फिर सर्किट में जाएंगे, लैंप इनको फिर यूज करेगा। करते करते बैटरी वुड हैव अ लिमिटेड ईएमएफ, है ना। बैटरी का 4 वोल्ट होता है या 6 वोल्ट, जो भी है, आपकी एक बैटरी लगी हुई है। A time will come when battery would not be able to charge, let's say 400 electrons in a second. ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, but if I consider that 1 electron is equal to 100, तो आपके 400 इलेक्ट्रॉन्स को एक सेकंड में अगर बैटरी फीड नहीं करवा सकी, एनर्जी उनको नहीं दे सकी, तो then what will happen? Let's say now the battery is able to charge 300 electrons, तो लैंप में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू होंगे? 300। तो लैंप को अब कम एनर्जी मिल रही है, तो उसकी इतनी अयाशी नहीं हो रही। अब कैंटीन वाला है ये, तो व्हाट विल हैपन? दैट एनर्जी वुड बी लेस, यानी ब्राइटनेस वुड बी लो। इन द सेम वे आफ्टर सम टाइम द बैटरीज, यानी बैटरीज वीकन मोर,
and now battery is delivering just 200 electrons per second. तो लैंप को भी 200 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे. When the lamp is gaining 200 electrons, its brightness would be more low. करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि battery is unable to charge any more electron or the sufficient electrons to create brightness in the lamp. तो ये लैंप में से जब एक दो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे भी तो लैंप को कोई फीलिंग्स नहीं आएंगे यार, कुछ नहीं हो रहा भाई, नो ब्राइटनेस एट ऑल. So what will happen at that time? You will say यार बैटरी चेंज कर दो. Why? Because battery is not able to provide you the EMF. Battery is not able to provide you the chemical energy. Sorry, battery is not providing you the electrical energy of your charge. तो इसलिए आप क्या करते हो, आप वो वाली बैटरी लेके आते हो which has its chemical energy. So technically can I say that EMF is the amount of chemical energy consumed by the battery to drive a unit positive charge in a closed circuit, isn't it? है ना? So EMF is that amount of non-electrical energy. ये देखो, amount of non-electrical energy converted into electrical energy when one unit positive charge flows is driven by the circuit, driven by the battery in the circuit. तो potential difference फिर क्या हुआ? Potential difference is basically that amount of energy which is converted from electrical to non-electric. आपका चार्ज लैंप में आया तो which energy does it have? कौन सा एनर्जी था इसके पास? इलेक्ट्रिक था ना? जी सर, इलेक्ट्रिक ही था. But again, Yes, I'm saying that when the charge is entering in the lamp, which type of energy did it have? electric. Electrical. जब लैंप ने क्या किया, its electrical energy is converted into non-electrical energy, light, heat, whatever that is. So can I say that due to potential difference, electrical energy is converted into non-electrical energy. So that means that amount of electrical energy converted into non-electrical energy due to flow of unit positive charge in the circuit is equal to potential difference. So definition is same, but nature of energy is changed. सही है, ये बात क्लियर होगी सबको. इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल आपको इसलिए बताई बिकॉज अगर आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं क्लियर होगा तो फिर कहीं पे भी नहीं क्लियर हो सकता. Got it, sir. ओके, ओके, गुड. मेरा बेटा, आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड बिकॉज आई बिलीव दैट यू पीपल गॉट इट. ओके, नाउ and this is right, they have same units, Sir, same, both have same unit. Yes, any isn't question? the potential difference and the EMF kind of same? Because the EMF provides the energy for charges to go through the circuit, तुम्हारी and आवाज I think बहुत तुम्हारी तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है. सो आई कुड नॉट गेट. आई आई गॉट दैट यू आर हियर, यू आर स्पीकिंग, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला आप क्या कहना क्या चाह रहे हो. can you hear me now? Yeah, I can hear you, but I could not understand what are you saying. I'm saying that isn't the potential difference in the EMF same because EMF provides the energy current to pass through the circuit, बेटा, and हाँ, I मैं think उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. They are not the same quantities. They are different quantities actually, but they have same units. But they have same units. Okay, so technically both are voltages. Is it clear to all? So lot of questions are there. These all are your practice questions. So I would prefer that you must practice these all questions which are included in this slide. यानी ये पूरी स्लाइड के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करना है. ओके,
Now measuring the potential difference is done with the help of a voltmeter. This is a voltmeter, and voltmeter must be connected with right polarity. Right polarity का मतलब ये है कि volt, this is the resistor, and your battery positive terminal is connected with the resistor, and resistor's positive terminal is connected, and resistor's one terminal is connected with the positive terminal of the voltmeter, and the other terminal of the battery is negative. So negative terminal of the battery is connected with the other terminal of the resistor, and as well as other terminal of the voltmeter. So remember one thing, very very important, very important. Voltmeter is connected across two points. यानी across two points का मतलब ये होता है कि voltmeter is connected parallel to the apply यानी component or cell. आप करंट वो एमीटर कैसे कनेक्ट करते थे? Emitter was connected in series. So here, this is the resistor. So voltmeter is connected across it. EMF is, yani voltmeter is connected across the cell. So this is the voltmeter shape. I believe that you people will have seen it, or you people have seen it in your labs. अब प्रॉब्लम क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि when the voltmeter is connected across the cell, that voltmeter gives you EMF, and that voltmeter which is connected across the resistor, that will give you the potential difference. That's it. This is a question which is asked to you. Any confusion till that point? No, Can sir. you repeat the last part you said? Yes, I said that when the voltmeter is connected across cell, it reads EMF for you because that is the voltage of the cell. And when the voltmeter is connected across the load, yani resistor, that gives you the potential difference across the resistor. Oh, okay, so it gives you ठीक है? the thing that is connected across, right? Across mean parallel. Yeah, Across yeah, का yeah. मतलब होता है over. But like, Got sir, it? is That is it, not does connected it in mean series. that voltmeters only found in parallel circuit? No, 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 no. I'm not saying that. You will use the voltmeter across any component, single individual component. For example, मैं आगे चल के examples मैं आपको बताता हूँ. For example, the diagram shows the battery connected with two identical resistors, three emitters, M1, M2, M3 meters are connected in this. So what would be the reading? Meter 1 reads 1 ampere. So what will be the reading on rest of the emitters? Because they all are in series, so they must have the same reading. So your answer should be D because they must read the same one, isn't it? Yeah. अब देखना That मैं is in voltmeter पे series, लेके आता. right? Yes. Okay, get it. Okay. Now check this one out. In the circuit shown, emitter X, emitter Y, there is a resistor, there is a lamp, 4-volt battery. What is the emitter Y reads? Emitter Y की reading क्या होगी? Emitter X reads 0.5 ampere. So emitter Y reads the same because they are in series. ठीक है ना? So these type of questions are from your current, and go to the potential difference questions. Um, just see, yeah, here. अब ये देखो. कह रहा है कि which circuit shows the voltmeter is connected to measure the potential difference across the cell. Across the cell. ठीक है, तो सेल के अक्रॉस आपके पास कौन सा वोल्ट मीटर लगा हुआ है? ए वाला. गॉट इट? सर डी नहीं है. डी नहीं है. डी सेल के अक्रॉस नहीं है. डी इज अक्रॉस दिस रेजिस्टर. दिस इज entirely wrong. This is entirely wrong. So A and D is the right placing. A भी आपका सही है, D भी आपका सही है. But D is, option D is the potential difference across resistor, not cell. ओह अच्छा अच्छा ठीक है. ठीक है? जी सर. ओके. कैलकुलेशंस के लिए आप लोग देख लो. For example, potential difference between the ends of the connector are 12 volts. How much electrical energy is converted from to other forms of energy?
when 100 coulomb charge flows. तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है. Potential difference is energy divided by charge or Newton divided by charge. Both are same things. You people can do it quite easily. So I believe that these questions would not be problematic for you. Now come to the resistance. Resistance is basically the ratio of ये आपने याद रखना है. Resistance is the ratio of potential difference to the current. Ratio of potential difference to the current. You have to write that, please. ठीक है, ये मतलब एग्जाम में आपने ये लिखना है. सो इट्स फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू वी बाय आई. व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू वी बाय, वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी इज इक्वल टू आई आर इसी से बनी हुई है. ठीक है. So the resistors are I mean responsible to provide you the resistance. फिक्स रेजिस्टर है और वेरिएबल रेजिस्टर है. आप लोगों को ये पता होना चाहिए. फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फिक्स होती है और वेरिएबल को हम लोग मैनुअली मूव वो करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं. देन रेजिस्टेंस का फार्मूला खैर यहाँ लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट. एंड आई बिलीव दैट इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर यू. ये ट्रायंगुलर इक्वेशन है. I is equals to V by R. Just put finger on that what you want and remaining will be available. I is equal to V by R. R is equals to V by I. V is equals to I into R. So its unit is ohm, and 1 ohm resistance is when you are having 1 volt potential difference across a resistor and it provides 1 ampere current. Then resistance is equals to 1 ohm. Now problem solving, that there are lot of questions for you. Current is given to you, voltages are given to you, resistance can be calculated. So use R is equals to V by I. Voltages are given, current is given, again use R is equals to V by I. How much current in the bulb? Resistance is given, voltages are given, I is equals to V by R. Moving coil galvanometer is connected, resistance is given, current is given. Just convert this milli into ampere. Okay, you have to calculate voltage. So V is equals to IR. So it's quite, easy. Step by step आप लोग use करोगे, because these all are just practicing equations. These are not the past paper questions. Practicing equation का मतलब ये है कि by all means you have to practice V is equals to IR, R is equal to VI, V is I is equal to V by R and everything. ठीक है, so you have to please do these all questions. उसके बाद आपको कहते हैं describe an experiment to determine the resistance of the metallic conductor using the voltmeter and ammeter to make. This is a question mostly we used to use that question in ATP as well, but this question is asked in theory also. कि आपके पास एक वायर है and you are going to change the length of the wire, and by that you are going to measure its resistance. So we need, what do we need? A variable resistor. Mostly we have a wire, then we have a power supply, voltmeter, ammeter चाहिए हमें, और हम लोग उसको सेट कैसे करेंगे? That is set in this way. This circuit is asked to you कि draw a circuit or sketch a circuit in which you are measuring the resistance of a resistor. ठीक है, place ammeters and voltmeters at the right position. 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, तो in this one if you do not put the variable it does not matter. ठीक है, लेकिन that variable resistor will help you out to control the current. सबसे पहले आपने क्या करना है? Set the variable at the resistance maximum value, ताकि आपके पास क्या हो, आपका करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. And when you will have minimum value of current, your voltmeter will read minimum voltages. Then you will decrease the resistance. You do the resistance decrease in the variable resistor, current would decrease in, current would increase in this, and voltages would increase in this. अब आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएगा? You will plot all the points, यानी you will plot all the values. ग्राफ ड्रा करना है I और V का, and that graph will give you the resistance of that wire. आपने क्या करना है? You have to plot the graph, and graph of I and V. I and V का graph, जो values आपने note down की. So the graph would be starting from 0 0 and it would be a straight line like this.
आप वी को ऊपर भी कर सकते हो, आई को नीचे भी कर सकते हो. So that is actually the Ohm's law also. So in Ohm's law, we have the potential difference and current together, and by with the help of graph we can calculate the resistance. देखो, अगर आपका V ऊपर हो, I नीचे हो, यानी V is at y axis and I is at x axis, then your resistance is equals to V upon I. और अब आप अगर गौर से देखो, तो that becomes gradient of that graph. So R is gradient of the VI graph. R is what? Gradient of VI graph. ठीक है? And here is IV graph. ये graph आपका क्या? IV graph है. So here when you are going to calculate resistance, resistance is 1 upon its gradient. Remember this. So पहला step क्या होगा? You will take gradient of that. Step number 2 में आप क्या करोगे? You will take 1 upon gradient, and that 1 upon gradient that will be equal to resistance. So if the graph is in this way, steeper the graph, smaller the resistance. Yeah, let's say this is your circuit A, this is your B. So whose resistance is greater? A. Less the steepness, more will be the resistance. Because inverse of resist gradient या inverse of steepness is resistance ना. तो अगर resistance आपकी gradient ज़्यादा होगा तो resistance कम हो जाएगी. So A का gradient ज़्यादा है, resistance इसलिए कम है. ठीक है. लेकिन इस ग्राफ में more the steepness, more will be the current, more will be the resistance. So for example, डिफरेंस क्या है? if I say difference बेटा उल्टी सीधी axis. ओके ओके देखो, ओके. in that graph I is at y and v is at x. यहाँ पे आपका v y पे और I आपका x पे है. So in this one, gradient of what? Gradient of A is greater than gradient of B. तो इसलिए आपको पता है कि gradient is resistance. So I can say that resistance of resistor A is greater than resistance of resistor B. That's it. ठीक है? Got it, sir. Okay. या Okay. Then basically here we are going to state about Ohm's law. Ohm's law की statement आपको बतानी है कि Ohm's law आपको ये कहता है कि this is asked for 2 marks at least, that the potential difference across a component, potential difference across a resistor कह दो, across a resistor is directly proportional to current if resistance is kept constant. That is simple. If resistance is kept constant. अगर आप resistance को constant रखते हो तो आपका V और I क्या हो जाएगा? It would be directly proportional. This is your Ohm's law and you have to recall its definition. Now we have the effect of temperature and limitation of Ohm's law. ठीक है. अब देखो, temperature has different impacts on resistance of filament lamp and thermistor. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, ओम्स लॉ यहाँ पे डिस्कस हुआ है. आई बिलीव दैट इट वुड नॉट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ओवर देयर. आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो ओम्स लॉ को. That is, V is directly proportional to I or I is directly proportional to V, and the graph will be straight and passing through origin. That is the identification of your Ohm's law. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है? Okay, if there is a conductor, yani metallic resistor, then its graph would be straight line and passing through origin. इसका मतलब ये हुआ कि its resistance is constant. ठीक है. Its resistance is constant. Constant resistance है आपके पास. But if the graph is not constant, ये देखो, मैं वापस आता हूँ ऊपर वाली दो लाइंस में, दो जो स्लाइड्स हैं वो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, आपका ग्राफ लीनियर नहीं है. If it is not linear, it means here V is not directly proportional to I. Also, although
V increases as I increases, लेकिन directly proportional नहीं है. Is it clear to you? So this is the actually filament lamp graph. जब आपका I on y axis होगा and V on x axis होगा, तो आपका ग्राफ it would be curve in यानी it will be curved towards V. बस एक बात याद रखनी है, हमेशा एक बात याद रखनी है कि फिलामेंट लैम्प का ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं होगा. ठीक है, सही है. एंड इट वुड ऑलवेज बी कर्व टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस. जिधर मर्जी वोल्टेज को लेके जाओ, इट वुड ऑलवेज बी कर्व टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस. देखो इसका कर्व किधर को है, टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस. सो इट्स कर्व इज टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस दिस वे. ठीक है. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट इन फिलामेंट लैम्प द प्रॉब्लम इज दैट इज मेड अप ऑफ मेटल. जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, इन मेटल द एटम वाइब्रेट विगोरियसली. ठीक, जब एटम आपके बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो दे डू नॉट लेट द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू. ठीक है. सो इन दैट केस आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, इन मेटल्स ओनली. इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा. ठीक है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और फॉर ईच इलेक्ट्रॉन what we have to do, basically we electrons are hindered due to vigorous vibration of atoms. तो इसलिए आपके पास क्या होता है, some of the energy is lost to overcome those hindrances or overcome those compulsions. तो उसकी वजह से आपके पास एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है, और हीट की फॉर्म में जब जाएगी तो रेजिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी. सो आपने ये याद रखना है, सिंपल, ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है. इंसुलेटर्स में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ड्यू टू दैट when we are going to apply some voltages across them, उनमें करंट फ्लो नहीं करता, रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो इसलिए उनमें ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं हो सकता हमारा. ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है. अब फिलामेंट लैम्प का केस मैं यहाँ पे बता रहा था. फिलामेंट लैम्प के ऊपर सारी सारी डिटेल मैंने बात कर दी है. फिलामेंट लैम्प इज मेड अप ऑफ मेटल. मेटल में ये होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू हीट अप द मेटल, इट्स एटम्स वाइब्रेट विगोरियसली, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं. और रेजिस्ट करने की वजह से अब आपका करंट उस तरह से रैपिडली इंक्रीज नहीं होता. इट इंक्रीजेस बट स्लोली. दैट इज व्हाई योर कर्व इज डिक्लाइन टुवर्ड्स, यानी इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व. ठीक है. ओके. Sir, देन question in the filament lab. दोबारा बोलो बच्चे. Sir, I have a question in the filament lamp. हाँ हाँ बोलिए. Is it like proportion, directly proportion initially? हाँ इनिशियली तो है, इनिशियली तो मैंने इनकार नहीं किया ना. इनिशियली इट इज, बट लेटर ऑन इट इज नॉट. ठीक है. Does it like go like this? Like first of all, it isn't. Then it मैं बताता हूँ. proportional, and एक्चुअली then जब आपके पास करंट बढ़ता है ना, तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. ठीक है. जब हीटिंग इफेक्ट बढ़ते हैं तो करंट ने सीधा ही जाना था लाइक दिस. ठीक है, यही जाना था. लेकिन एज हीटिंग इफेक्ट्स इंक्रीज, आपका करंट क्या हो जाएगा, करंट उतना रैपिडली नहीं बढ़ेगा. इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे अ, अगर हम रनिंग पे जाए ना, हम मतलब नॉट एथलीट्स, तो हम जो ही थोड़ा ज्यादा भागेंगे तो हम शुरू में थोड़ा भाग जाएंगे लाइक दिस, बट आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टू रन, बट द स्पीड वुड not be increased at that rate. That's it. Very simple. oh, Here, give it. अब आपका V इधर है. Yes, बात समझ आई है. Now I is here.
तो मैंने आपको एक निशानी बताई विच इज क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग निशानी के in this all what you have to see that the graph would be curved towards what voltage axis. अब आप देखो graph would be something like that. Voltage axis इधर है. So did you see what happened? Graph is always curved towards voltage axis like this. Filament lamp. These two graphs are for filament lamp. Are you getting it? Yes. Okay. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने एक चीज और ऐड करनी है एंड दैट इज I need to add one page for your thermistor. Actually, thermistor is some sort of device which is temperature sensor. Thermistor का सिंबल ये होता है, ठीक है. ये सारी चीजें आपने याद रखी हैं. बहुत शॉर्टली आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ बिकॉज दैट इज नॉट डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं और आप लोगों का जस्ट मेन फोकस ये होना चाहिए. थर्मिस्टर is negative temperature sensor. Negative temperature sensor. इसका मतलब समझाता हूँ. इसका फंक्शन ये है कि its resistance decreases at temperature increases. और रीजन ये है कि थर्मिस्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल का मिक्सचर होता है. तो जैसे जैसे आप हीट अप करते हो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं. जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो करंट आपका ज्यादा बढ़ जाता है. इसका जो ग्राफ होगा आपने ये याद रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं समझ रहा हूँ अगर आपको ये ग्राफ्स पता है तो यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम टू हैंडल दिस. थर्मिस्टर का ग्राफ इज ऑलवेज कर्व्ड टुवर्ड्स करंट. ये आपका लेट से करंट है, ये आपका वोल्टेजेस है, ये आपका करंट है, ये आपका वोल्टेजेस है. इन द सेम वे ये आपका लेट से मैंने रिवर्स कर दिया ना, आई बी और वी आई कर दिया. थर्मिस्टर के ग्राफ की ब्यूटी बता रहा था. थर्मिस्टर का ग्राफ हमेशा आपका किधर को होगा, इट वुड बी कर्व टुवर्ड्स करंट एक्सिस दिस वे. अब करंट एक्सिस आपका इधर है तो ये इधर आ जाए. दैट्स इट. ठीक है. Could you अब explain this a little more, sir? यस, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज जस्ट द प्रोफेशनल एथलीट. ठीक है. प्रोफेशनल एथलीट क्या करेगा, it would not increase the race as the race started. थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेगा and at the end of the race it makes a sprint. That's it. ठीक है. तो इसलिए थर्मिस्टर क्या करता है, इनिशियली इट्स टेम्परेचर यानी इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज बट लेटर ऑन इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस अ लॉट. जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है ना with temperature increase, this is the temperature and this is the resistance graph. So as resistance temperature increases resistance आपकी decrease होती है. जब resistance decrease होगी what would happen to the current? Current आपका increase हो जाएगा. Is it ना? देखो करंट और रेजिस्टेंस का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है. तो इन दीज ग्राफ्स क्लियर है ये. So Yes, in sir. these graphs the only trick is use v is equals to ir. ये आपने यूज करना है और ये यूज करके आपने सिर्फ एक काम करना है, दैट इज
Hunt the value of current. IRV जो भी आपके पास गिवन है ना, उसकी वैल्यू आप ग्राफ से निकालो। ठीक है, ग्राफ से फाइंड करो, फिर क्या कर दो, उसको करस्पॉन्डिंग एक्सिस पे लेके जाओ। फाइंड इट्स corresponding VRI। अब देखो मैंने उल्टा लिखा है, अगर I दिया हुआ है तो उसका आपने V ढूंढना है, अगर V दिया हुआ तो आपने उसका I ढूंढना है। बात समझ आ गई? मैं समझाऊंगा भी, मतलब इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा। और फिर आपने फाइनली क्या करना है, यूज R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। दैट्स इट, आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, बट कोई इशू नहीं है, इधर मर्जी आपका ग्राफ हो। लेट्स से इफ आई वुड हैव एन एग्जांपल, I would love to explain that from there. Yes, this is that graph. मैं let's say नहीं, ये light independent। Okay, let's say this is graph. I will give you some values. Suppose it is 10 volt, 20 volt, 30 volt, and 40 volt. And this is, let's say, 0.1 ampere, 0.2 ampere, 0.3 ampere, 0.4 ampere। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि what will be the resistance at 0.4 ampere। given क्या है, 0.4 है, this is your given। just draw a line from 0.4 to the graph। ये पहुंच गए आप, ठीक है, and then go from that to the other axis, opposite opposite axis पे चले गए आप, and you have calculated this volt, this value। आपका I given था, तो आपने V को क्या किया, फाइंड किया ग्राफ्स की मदद से। इज द पाथ, एंड देन यू यूज R इज इक्वल टू V बाय R। अब आप देखो, मैंने बोला कोई भी एक्सिस हो, इट डज नॉट मैटर। V की वैल्यू 30 है, I की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 750 या हाँ 750 एम वो ओम। चेक कर लो कैलकुलेटर से, गलत भी हो सकता है। क्लियर है ये? Yes, sir. Sir, सो exit, टिल दिस, दोबारा बोलो बच्चे। isn't it 75? हाँ 75 होगा, जो भी होगा वो कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना, बिकॉज मेरा जापानी कैलकुलेटर इस टाइम थोड़ा सा उसका सोलर सिस्टम फ्लॉप है ना, तो वो कैलकुलेशन शायद सही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इट वुड बी 75 होगा। ठीक है, Yes. ओके। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और आई बिलीव दैट on this weekend we will have some practice stuff for this one, inshallah। ये नोट्स भी भेज देता हूँ आपको, ये बहुत शॉर्ट और क्विक यानी क्रैश कोर्स के नोट्स हैं। आई बिलीव कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। Sir, do you have a detailed one? हाँ, Do you have the detailed one?